Yes, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay, fine. How many of you are late in the class? Yes, Surid, Ankita. Okay, let us start our class discussion. And students, you are having the makeup midterm exam from 14th onwards. Okay, and the HSM 101 paper will be on 16th. Okay, it will be from what time? Can anybody just mention that? Ma'am, communication. No, I am asking that what will be the timing for your exam? HSM 101. Have you checked the timetable? Yes, timetable check किया क्या? Yes, ma'am. Ma'am, but Okay. the time I didn't recall. No, it is from 10 to 11. Okay. That's On fine. 16th, the HSM 101 paper will be 101 exam will be from 10 to 11. Okay. So you have to join uh, by 9:40, 9:45 itself. Okay. We will be having this class. Okay. In this class itself, I'll be sending you the link of the exam paper. Okay. So I'll be sharing the information in your WhatsApp groups. Clear about the examination links and all that. So first, all need to join the class. Then you have to take the link from here, and then you can disconnect yourself and do the exam and submit your answer sheets. One point I'll mention here, that those who are thinking that we did not perform well in the previous exam. Okay, so if you want to reappear in this exam, you can reappear. Is this point clear? Yes, students. Yes, ma'am. Okay, those who want to reappear for the exam can reappear for the exam. Clear? And Ma'am, yes. ma'am, before the means reappearing, can you please show us our answer sheet such that we could know how you like our answers? See, there will be definitely. I'll be showing. I can show you your answer sheets. Okay, I can just forward that particular answer sheet on your link, on your email link you have provided in the form. Okay, so I'll be posting that in your emails. But the point is, only the scores you will be able to observe there. Okay, because there is no provision of any type of marking there in the Google form. No, no, ma'am. I can Like just you can present your screen and show us. yes, I can present. I can present. See, that is of, I think, not much use. What I um, want to say Just here, one. okay, You can see, discuss one paper. That would be enough. okay, one paper, you want one example paper has to be discussed in the class. Yes, ma'am. Now. Okay, I'll definitely do that. I'll definitely do that. Okay, so that you can do in evening. If you people are free in evening, we can have half an hour class with the same link. Okay, the timings you can tell me, and that time I'll be discussing that answer sheet, because at this lot of time I'm not going to discuss the answer sheet, because I have to complete the topic also. Okay, because this formal communication is also there.
for the exam. Okay, so Okay. I need to Yes. complete this topic. Yes, Yes, ma'am. and decide one time, inform me, okay, but don't make frequent changes, because accordingly I have to settle down my time. Clear? So you can just tell me one convenient time of yours of half an hour. Okay, in that half an hour, those who want to see their copies or those who want to discuss how to answer a particular question, okay, you can join that class and we will discuss taking example of one of the answer sheet submitted by you people only. Okay, is this okay? Is this comfortable? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. 4:30, Jitendra, no, not 4:30, because 4:30 we have a meeting. Okay, and So it you tell ends me. up to 5:15. So you can make it after Why? 5:30. 5:30 के बाद में जो भी आपका कन्वीनियंट टाइम है वो हाफ एन आवर का आप डिसाइड कर लो, है ना? Okay, ma'am. Clear? Okay, let us start ठीक our है, ma'am. discussion. See, in the previous class, you were observing that we discussed about formal communication. Okay, in that formal communication, we discussed that what is it, okay, and what are the various features of that formal communication. Okay, features like it has a format, it helps to develop formal relationships, okay, and many more. Okay, we discussed about all those. Now, the other point related to formal communication, which we have to check, that is that why a particular formal communication is adopted at a workplace. Okay, what are its advantages? What are its beneficial aspects? Okay, so in that sequence, we have to check that the first point is maintenance of authority of the officers. Okay, so through formal communication, the authority of the offices and the officers is maintained. Okay, because see, in formal communication, we have checked that a particular pattern, a particular method has to be followed, hierarchy has to be followed. So in that sequence, the maintenance, or we can say the authority, is reflected. Okay, the authority is reflected, I mean to say here that is a particular office is important. A particular, we can say, designation is important. How that is important, okay, that all can be judged through formal communication only. Okay, the reason behind that the particular office, the particular authority does a specific work, okay, which no other authority, which no other office can do. So if that particular office, that particular authority, that particular official is doing that work, okay, repeated times, definitely there is more efficiency in his or her work. Okay, so as the efficiency is more and it is a very, we can say, routine work for that office, so it is done more effectively. So that is one of the very beneficial aspect of formal communication, that the work is distributed. Okay, the work is distributed among the offices in the organization, and whichever office does a specific work, that office and the officials are quite competent to do that work. Okay, why those officials or the office or that office is competent to do that work? Because that is the repetitive work, that is the authorized work of that particular part of that organization. Okay, so that is the reason more and more effectivity will be reflected in their work. For example, सपोज आप जो है एप्लीकेशन राइटिंग की कंटिन्यू प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, सपोज आप 10 डेज के लिए जो है वो एप्लीकेशन राइटिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, and also you are learning many of the things related to application writing. What will happen on the 11th day if somebody asks you to write an application? Okay, it will be much better
it will be much updated in terms of the very application written by you on the very first day. Yes, students, do you agree with this point? जो फर्स्ट Yes, डे ma'am. आपने एप्लीकेशन लिखा, ठीक है, जो भी आपका अवेलेबल इंफॉर्मेशन था, ठीक है, अवेलेबल आपका नॉलेज था, अकॉर्डिंग टू दैट आपने एप्लीकेशन लिखा, ठीक है, लेकिन जो है उसको आपने फर्दर खूब प्रैक्टिस किया 10 डेज तक, आपने उसके सारे जो स्टेप्स हैं या और फर्दर जो वोकैबुलरी पार्ट है, जो लिंग्विस्टिक स्किल्स हैं, ठीक है, इन सब पे भी आपने एक्सरसाइज किया कंटिन्यू, ठीक है, फॉर्मेट्स को भी आपने चेक किया कि और भी अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं क्या, अपडेटेड कोई फॉर्मेट है क्या, ठीक है, तो फाइनली जब 11th डे फिर से आप एप्लीकेशन लिखते हैं, ठीक है, या somebody does that work, okay, which continually that person has practiced for 10 to 11 days, definitely there will be a positive change on that 11th day, okay, positive change होगा and that will be more effective one, ठीक है, और उसमें error भी कम होंगी, what will क्या होगा, error भी कम होंगी, ठीक है, so that is the reason we say that if the work division is done and a specific office of that organization does a specific work, okay, due to continued practice, due to continued exercise, that particular office or the official gains the competency in that work, okay, and that work is effectively done. वो जो वर्क है वो इफेक्टिवली वो ऑफिशियल या वो ऑफिस कर सकता है इन कंपैरिजन टू एनी अदर जनरल पर्सन, क्लियर, और एनी अदर पर्सन हु इज फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप, हु इज फ्रॉम डिफरेंट ऑफिस, क्लियर, फॉर एग्जाम्पल जैसे अकाउंट्स का ऑफिस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, so people who are already doing work there, those understand all the terminologies, those are quite competent to do all those day-to-day affairs of that account office, okay, but किसी general person को आप वहाँ पे जनरल या कोई outsider if उस वर्क को करना शुरू करता है तो the person in starting will face lot of difficulties, okay, and will not be able to do with that much effectivity, इतना easily और इतना effectively वो उस काम को नहीं कर पाएगा. Do you agree with this point? हाँ, Yes, ma'am. है Yes, ना, ma'am. और तो ये पॉइंट है, एंड इसके लिए ये भी है कि the person who are engaged for a particular office, they already have certain level of competency and rest of the other competencies are developed through training, ठीक है, यानी किसी पर्टिकुलर ऑफिस के लिए रिक्रूट भी वही होता है जिसमें एक बेसिक लेवल की उस ऑफिस से रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज होती हैं, स्किल्स होती हैं, वर्किंग स्किल्स होती हैं. कॉम्पिटेंसी क्या होती है, वर्किंग स्किल्स, ओके, so if the person has that working skill, then only that particular person will be appointed for that office, okay, and if the person is repeatedly doing that work, okay, definitely will gain more expertise in that, will more effectively perform that work in comparison to any other outsider, clear. So that is how the maintenance of authority is done by formal communication, okay. अथॉरिटी का मेंटेनेंस जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू ही होता है, ठीक है, ओनली दैट इज पॉसिबल. यू कैन चेक हियर, formal communication maintains constant relations among the superiors and the subordinates, as a result of whom the dignity of the line superiors is maintained, okay, consequent. And see one more point, as we have checked that there is a formal relationship in the formal communication, so now nobody can interfere in others work, okay, for each and every work the authorities are assigned, okay, those are authorized, so no other authority interferes in that, clear. So that maintenance of authority is happening here in formal communication.
Consequently, it is convenient to control the subordinates and fix their responsibility, which is absolutely needed for effective and successful control. Okay, so this is ये चीज आप यहाँ पे समझो कि effective and successful control is extremely needed at workplace. Okay, and that can only happen through formal communication. Is this point clear? Yes. Now, Yes, ma'am. next one is, as you can see here, the next point is clear and effective communication. Formal communication is clear and effective communication. The reason behind that, people are doing that repeated times. Okay, so they are very much clear which of the format has to be adopted, okay, which of the vocabulary has to be used, what type of linguistic skills are to be used in that, okay, what content has to be placed at what place. Okay, it means the order of information is also quite clear, okay, is very much understood by the authorities who are doing that work. Okay, so that is the reason it is sorry, it is more clear. Okay, and as this type of communication is done through specific people. Okay, so those specific people as are very much well versed with the work. Okay, so definitely the effectivity is reflected. Is this point clear, students? जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि आप जो है इफ एप्लीकेशन, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एप्लीकेशन राइटिंग का, ठीक है, लेकिन इफ उसको भी आप रिपीटेड टाइम्स करोगे, ठीक है, तो एंड उससे रिलेटेड और फर्दर इंफॉर्मेशन गेन करके उनको एड ऑन करके उसको अपडेटेड वर्जन में इफ आप प्रेजेंट करोगे तो डेफिनेटली इट विल. Ma'am, you are muted. Ma'am, you are muted. Ma'am, 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 you please are not unmute. audible. Ma'am, please unmute yourself. I think it was muted. yes, ma'am. Now it is okay. Yes, ma'am. Okay, fine. So the point is that if something is repeated times practiced, okay, and we can say the very latest things are also included in that time to time, okay, it becomes more effective, it becomes more impressive. Okay, see, one assignment for you people today, section B, all of you will write an application. Please note down, all of you will write an application to the librarian of your university, to the librarian of your university for requirement of some books, for requirement of some books in the library. ओके, अब ये एप्लीकेशन आप कहाँ लिखेंगे? आप एप्लीकेशन प्लेन पेज पे लिखेंगे, ठीक है, जिसका जो भी एप्लीकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है अभी तक का, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग इस एप्लीकेशन को फ्रेम करेंगे एंड on plain white sheet you will write the application, take an image of that, then post that image in the Google Classroom. ठीक है, तो हैंड रिटन होना चाहिए, टाइप करके नहीं भेजेंगे मुझे. इज दिस पॉइंट? मैम गूगल क्लासरूम का अकाउंट है ना अपना, HSM 101 का कोड. मैम यस,
उसमें आप सेंड करेंगे, आप Ma'am, एप्लीकेशन he is लिखेंगे। asking for the classroom code. हाँ, He is asking for the Google Classroom code. He is not there. गूगल क्लासरूम कोड चाहिए आपको। कोड में अभी आपको इस क्लास के बाद में या अभी जस्ट थोड़ा सा लास्ट के मिनट्स में आपको बताती हूँ, ठीक है? आई विल शेयर, ओके, बट ऑल ऑफ यू विल राइट एन एप्लीकेशन। ओके, एप्लीकेशन किसके बारे में है? यू विल आस्क फॉर सम ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी फ्रॉम द लाइब्रेरियन ऑफ योर यूनिवर्सिटी। ओके, व्हाट इज माय पॉइंट? आपको इश्यू करवाने के लिए बुक नहीं चाहिए, आपको वो बुक्स लाइब्रेरी में चाहिए। उनकी कॉपीज अवेलेबल नहीं है लाइब्रेरी में, बट एज पर योर इंफॉर्मेशन दोज बुक्स आर वेरी मच important for certain subject. Okay, so you are asking, you are putting your request to the librarian as student that please arrange all these books in the library. Okay, and also you can mention that how much copy of a book is quite sufficient. Okay, suppose कोई book जो है वो बहुत important है और उसको सब particular students सब स्टूडेंट्स को यूज करना है, तो एटलीस्ट 5 to 10 कॉपीज यू रिक्वायर ऑफ द बुक। ओके, सो this is how you have to write an application. You will write on plain white sheet. Okay, you will take the image and that image you will post in the classroom account of yours. Is this point clear? Yes, ma'am. Okay, and by Friday you can post, so you have sufficient of time. Why I'm not making it compulsory to post it in 1 or 2 days only? Because your exams are proceeding, so focus on your exam first, and by Friday, as your exams are over, it will hardly take half an hour to write an application of this type. So you will write an application, you will post it in the Google Classroom account. Fine. And those students who are absent, please inform that them also. Okay, और क्लासरूम में भी मैं मैसेज ड्रॉप कर दूंगी आपका, ठीक है? Yes, so see, this point we have to check that formal communication is clear. It means it has the clarity of the information. Okay, why? Because it is deliberately done. This is one of the very important feature of formal communication we have discussed earlier. Okay, that in formal communication the actions are deliberately done. Okay, with cautious efforts. So as the cautious effort is inbuilt in that, those are deliberately done, so those have much clarity and effectivity in them. Okay, so there is no scope of, we can say, diversion. There is no scope of confusion. Okay, whatever instructions are there, whatever information is there, accordingly the other person follows, the other side follows. You can see here, in formal communication there is a direct contact among the managers and the subordinates. This is one of the example taken for referring this point. Both understand the capability, habits, feelings, etc. of one another. Managers know as to when and under which conditions their subordinates need information. In this way, this communication is capable of making available timely information. Hence, it is clear and effective. Okay, so as see, जैसे एग्जाम का टाइम टेबल अभी आपका जस्ट प्रीवियस वीक में पोस्ट हुआ, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि, और एग्जाम आपका अभी कब है? 14 से स्टार्ट है, ठीक है? सो ये जो एग्जामिनेशन टाइम टेबल आपको पोस्ट हुआ, ठीक है, पर्टिकुलर स्लॉट ऑफ टाइम में, तो उसका रीजन यही था कि as your exams are there, okay, so you will need the timetable information that on which date, at what time, which of the subject exam is there. Okay, so according to your requirement, the information was provided from the other side. Okay, so, and that also in a particular format. Okay, the subject name is written, time is written, date is written.
Okay, so it is quite clear. The information has the clarity, okay, that on what day, in what time slot, what subject exam is there. Okay, so you can easily connect with the exam. Is this point clear, students? This is what clarity and effectivity means. Okay, that as per the requirement in a particular format, if the information is available to the employees, okay, then the work is efficiently done in the organization. Now, next point is, this is also one of the very important advantage of formal communication, that is orderly flow of information. Okay, orderly flow means there is an order, there is a sequence of information, that first the information will be uh, circulated to higher authority, then the higher authority will circulate that to the related subordinate, then the subordinate will again pass on that information to the related person. Okay, so this order is maintained. Okay, what is the benefit of this order maintenance in the communication or in the productivity system of any organization? See, due to this order, what happens if something is missing at one order, okay, that can be maintained, okay, through the other order. Otherwise, what will happen if there is no order? Okay, there is no definite order, there is no definite hierarchy. What can happen? Nobody will take the responsibility of the errors, and it will be a totally mess. Is this point clear, students? Yes. Yes, yes, ma'am. Okay, so that is the point कि जो है ये जो ऑर्डर, ये जो हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन रहती है या इसको फॉलो करना जरूरी है, और इंफॉर्मेशन फ्लो का ये एक सीक्वेंस है, ठीक है, तो इसका एक अपना बेनिफिट है. ठीक है, सपोज किसी एक स्टेप पे कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी वर्क मिस हो गया, तो दैट कैन बी मेकअप बाय द अदर लेवल. Okay, and that can be pointed out, and that can be resent to the previous one, and the work could be done. Okay, if ऐसा हायरार्की या स्टेप्स में इंफॉर्मेशन नहीं हो, एक सीक्वेंस, एक रेगुलर सीक्वेंस में इंफॉर्मेशन सॉरी वर्क का जो है ट्रांसफर नहीं हो, तो क्या होगा? इफ इट इज इरेगुलर, ठीक है, तो एनीबडी कैन डिनाई कि मैंने ये किया ही नहीं था, ये मेरी गलती है ही नहीं, और इवन एनीबडी कैन डिनाई फॉर corrections also. Okay, and it will be a, we can say, it will be a totally mess in the organization. Okay, so that's the reason that due to formal communication, the order is maintained. Okay, that sequence, that hierarchy is maintained. Clear? So you can see here, the information has to pass through a definite route, okay, from one person to another. Hence, the flow of information is systematic. Now, you please tell me कि एक आप कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जाते हैं, okay, you want to go to some destination. If you know the definite route of that destination, how much time it will take? Just quickly come out with the answers. Don't sit silent. बताएंगे? सपोज आप किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, आपको अपने घर से जो है, obviously it will take less time. हाँ, it will take less time, okay, and you will be mentally prepared for that. Okay, you will be mentally prepared for that, you will be mentally relaxed, okay, you will be quite comfortable to reach that place, and according to the distance you will be able to make the preparation. Suppose it's a long, let it be it's a long definite distance, but it is a longer one, so you can think of the commutation arrangement. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट, कम्यूटेशन, ट्रांसपोर्टेशन. ओके, यदि लॉन्ग डिस्टेंस है तो आप उसके लिए एक कम्यूटेशन का जो है अरेंजमेंट भी कर पाओगे, आप सोच पाओगे कि मुझे किस ट्रांसपोर्टेशन से वहां पे जाना है. ओके, बट if the situation is vice versa, then what will be the state? Yes, quickly come out with the answer.
इफ सिचुएशन जो है वाइस वर्सा है, यानी डेफिनेट we पाथ may नहीं not, है, उसकी we इंफॉर्मेशन may नहीं है or may आपको. not reach them. हाँ, Mom, we We'll may be reach or confused may like not reach. where to go, how to go. हाँ, It will be a एक तो wastage of कंफ्यूजन time. होगा, डेफिनेटली कंफ्यूजन होगा. किसके रिगार्डिंग? पाथ के रिगार्डिंग, कि कैसे जाना है. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट. बिकॉज कंफ्यूजन जो है पाथ का है, रास्ते का है, और डिस्टेंस का भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, तो आप ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट भी प्रॉपर नहीं कर पाओगे. ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी, कम्यूटेशन के बारे में भी नहीं सोच पाएंगे आप. ठीक है. थर्ड पॉइंट क्या होगा? बिकॉज ऑफ द कंफ्यूजन, बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, ओके, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डेफिनेट, व्हाट विल हैपन? इट विल बी मच टाइम कंज्यूमिंग अफेयर. ठीक है, ये टाइम कंज्यूमिंग अफेयर होगा. यस, इसमें बहुत ज्यादा टाइम Yes, ma'am. लगेगा. Yes, यस स्टूडेंट्स, डू यू एग्री विद दिस पॉइंट? yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. ये बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. आप किसी अननोन प्लेस को जब फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करते हो तो आपको ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन उसी जगह जब आप दूसरी बार जाते हो या तीसरी बार जाते हो उसी रास्ते से, तो आपको कम टाइम लगता है. Isn't it? Is it right or not? Yes, ma'am. माफिजुर, ये एक दो स्टूडेंट्स को छोड़ के बाकी सब क्या क्लासरूम मीटिंग ऑन करके क्या सब सोने चले जाते हैं क्या अर्ली मॉर्निंग आवर्स में? हाँ, रात को क्या करते हो आप लोग? क्लास में पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं आप लोग. ऐसे कैसे चलेगा बताइए? जैसे आप फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल मैं आपको दूं. जब आप फर्स्ट टाइम यूएम जयपुर कैंपस इफ आपने विजिट किया है, आप में से कुछ लोगों ने, ठीक है, या आप आने का सोचोगे, तो जब आप फर्स्ट टाइम आओगे तो आप ऑब्जर्व करना, ये मेरा पॉइंट, ये आपको कितना टाइम मिला, सॉरी कितना टाइम आपको लगा. ठीक है, एंड हाउ यू मैनेज टू रीच द प्लेस. ओके, then compare that particular experience of yours with the second or third visit of yours. Okay, you yourself will be able to check this point, that the second, third, that was comparative more easy. Okay, and it was more, we can say, more confirm affair. ठीक है, बिकॉज आपको पता है कौन सा ट्रेन पकड़ना है, फिर हमें ये भी पता है कि वहां से कौन सा टैक्सी आपको हायर करना है, कितना आपको टाइम लगेगा, कौन सा वे आउट जो है वो उससे आपको कम टाइम लगेगा. ठीक है, विद द सेकंड थर्ड विजिट यू विल बी एबल टू गेट ऑल दीज इंफॉर्मेशंस. ओके, बट द फर्स्ट टाइम it will take much time, okay, and it will be, we can say, a slightly difficult task. Okay, the reason between two differences is that in the first, things were not definite. Okay, as things were not definite, so one has to ask, and as per the suggestions, as per the given directions, the person has to follow. Okay, but in the second experience, things become definite, the person has the knowledge of that definite path. Okay, then it is less time taking. Okay, it is we can say more time saving process. Okay, and there is no confusion at all. Is this clear? Is this Yes, okay, Yes. students? Okay, yes, ma'am. okay. So now let us come for the next point, that is easy knowledge of source of information. Okay, so see, because of the formal communication, it becomes easy. Okay, it becomes quite comfortable to reach to any information. Are you getting this point, how it is possible? See, for example, जैसे अभी आप यूनिवर्सिटी तो फिजिकली अभी आए नहीं हैं, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ऑनलाइन वी आर फॉलोइंग द सेम थिंग्स. ओके, दैट
Sometime you are receiving the timetable of the classes, sometime you are receiving the information of the timetable of the exams, okay? You are getting the links of the classes, okay? And also time to time various informations are there related to various tasks, okay? So suppose अब कोई स्टूडेंट, कोई नया स्टूडेंट ज्वाइन करता है, वो आपसे पूछता है, डायरेक्ट हमसे नहीं पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन वो अपने किसी क्लास फेलो से पूछता है कि जो है कौन कौन सी क्लासेस हो रही हैं, क्या क्या टाइमिंग्स हैं, व्हाट यू विल सजेस्ट? quickly, this is not that much difficult question. Quickly come out with the answer. What you will suggest, students? क्या सजेस्ट करेंगे आप? क्या सजेस्ट करेंगे? About the classes में वो नेटवर्क थोड़ा आवाज नहीं आया था. हाँ, क्लास के लिए, हाँ. We'll tell him the subjects. 7 subjects की. थोड़ा ये जितेंद्र, आपने क्या ईयरफोन यूज किया हुआ है क्या? Yes ma'am. हाँ, तो ईयरफोन का जो माउथ पीस है उसको थोड़ा सा अपने माउथ के नजदीक लाकर फिर बोलो आप. आपका साउंड क्लियर नहीं है. Ma'am, we will tell him that we are having. We will tell him the name of the subjects. And नो, आप उसको क्या फॉरवर्ड, आप इतना डिटेल में खुद नहीं जाओगे, आप उसको टाइम टेबल, आप उसको क्या बोलोगे कि ऑलरेडी a टाइम टेबल इज देयर, ओके, एंड यू विल फॉलो दैट, यू विल फॉरवर्ड दैट टाइम टेबल, है ना? और सपोज वो टाइम टेबल, इफ सपोज क्लासरूम अकाउंट में है, और सपोज ये सिस्टम है कि जैसे ही कोर्स ज्वाइन किया स्टूडेंट का, क्लासरूम ज्वाइनिंग ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है? तो आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि क्लासरूम में ऑलरेडी टाइम टेबल है, क्लास टाइम टेबल, ओके? तो आप वो क्लास टाइम टेबल को चेक करो, वहां पे आपको कौन से सब्जेक्ट की किस टाइम स्लॉट में क्लास है, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ओके? सो द पॉइंट इज कि क्लासेस की इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए प्लेटफॉर्म क्या है? टाइम टेबल. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ हाँ. और अभी जैसे क्या एग्जाम कब स्टार्ट होगा, ठीक है, या आपको फी डिपॉजिट कौन से डेट तक करवानी है, या आपका कोई कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, ठीक है, या आपकी जो है कोई इवेंट का सपोज जो है वो इंफॉर्मेशन है, तो टाइम टू टाइम नोटिसेस आते रहते है ना? जैसे स्कूल्स में आपने इफ ऑब्जर्व किया तो नोटिस बोर्ड होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी होते हैं, यूनिवर्सिटी में भी होते हैं, ठीक है? तो नोटिस बोर्ड पे ये इस टाइप की इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड रहती है, ठीक है? तो कोई सपोज आपसे पूछे और आपको एग्जैक्ट नहीं ध्यान में है, ठीक है, या आप उस पर्टिकुलर मोमेंट में किसी और काम में बिजी हैं, ठीक है, तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे कि प्लीज वहां वो जो नोटिस बोर्ड है, ठीक है, कॉमन नोटिस बोर्ड है इंफॉर्मेशन का, आप वहां पे एक बार चेक कर लो. तो इंफॉर्मेशन गेन करने का एक सोर्स है, एक डेफिनेट सोर्स है फॉर्मल कम्युनिकेशन में, ठीक है? तो दैट बिकम्स इजी एंड दैट इज मोर एक्यूरेट, दैट इज मोर ऑथेंटिक. क्यों? बिकॉज दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इज displayed through some of the office, some of the authority only, okay? There is no scope of change in that. Is this point clear? कि इंफॉर्मेशन गेन करने का एक पर्टिकुलर सेट प्लेटफॉर्म, सपोज जो है जनरल इंफॉर्मेशन आपको चाहिए यूनिवर्सिटी की, तो हम लोग या कोई भी आपको इन जनरल क्या सजेस्ट करता है कि प्लीज विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, isn't it? Yes, Abhik, Pragya. Yes, ma'am. Okay, so and it is quite correct platform, because as you will check that website, you will get all the general informations about the university, that what courses are going on, okay, and how many years it take to complete a certain course in the university, okay, what are the subjects, who are the faculties, what is the academic schedule. All these general informations are already available on that website, okay? So that is again a very, we can say, a very beneficial point of formal communication. ये समझ में आया आपको? ठीक है, कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो बिकॉज डेफिनेट है, ठीक है? तो
किसी को, या सपोज खुद को ही अपन को अब इतना इस लेवल पे आके तो हम खुद भी कॉमन सेंस यूज करने लग जाते हैं, खुद भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन के बारे में ऑटोमेटिक एक हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। जैसे हम कभी भी ये नहीं पूछेंगे, ठीक है, जैसे हमारा न्यू एडमिशन हुआ तो हम कभी भी किसी से ये नहीं पूछेंगे कि स्पेसिफिक सब्जेक्ट की क्लास कब हो रही है, हम उसको डायरेक्टली क्या पूछेंगे, व्हाट इज द क्लास टाइम टेबल, isn't it? Why do we ask this question, that what is the class timetable? Because it will tell all other things which we want. Yes, it will tell all the details which we require in terms of classrooms of various subjects. ठीक है, कि वेरियस सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की जो टाइम स्लॉट्स हैं क्लासेस के, ठीक है, और इवन टीचर की इंफॉर्मेशन भी टाइम टेबल में मेंशन्ड होती है, कहीं पे वो एब्रिविएटेड फॉर्म में होती है, कहीं पे वो कंप्लीट नेम के फॉर्म में होती है। बट एज हमें हमारी पहले से अंडरस्टैंडिंग है टाइम टेबल के स्ट्रक्चर को लेकर, टाइम टेबल के पैटर्न को लेकर, तो हम इमीडिएटली क्या पूछेंगे कि टाइम टेबल, क्लास टाइम टेबल क्या है। हम क्लास टाइम टेबल ही क्यों पूछ रहे हैं, हम क्लास कुछ और क्यों नहीं पूछ रहे, जब हमें सिर्फ वो सब्जेक्ट्स के टीचिंग लर्निंग स्लॉट के बारे में जानना है। बिकॉज वी नो दैट दिस इज द प्लेटफॉर्म which provides this type of information. Okay, so we will ask for that particular information only, we will not ask any other information. ठीक है, लेकिन सपोज हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो है ये एग्जाम चाहिए कि एग्जाम कब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो मिड टर्म फर्स्ट मेकअप एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या पूछेंगे कि एग्जाम का कोई नोटिस आया क्या। ये जो जनरल स्टेटमेंट्स हम करते हैं, मैं उनसे आपको इसलिए रिलेट कर रही हूँ बिकॉज यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। हम नहीं करते क्या इस टाइप का डिस्कशन, अर्हित? यस मैम। यस अर्हित, हम पूछते हैं ना एग्जाम का नोटिस आया क्या कोई? हाँ मैम। किस लिए? बिकॉज हमें पता है, हमें ये सिस्टम पता है, हमें ये फॉर्मेट पता है कि जो है नोटिस के थ्रू एग्जाम की इंफॉर्मेशन आती है कि इस डेट को एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, isn't it? ठीक है, तो हम उसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को, उसी पर्टिकुलर रिसोर्स को हम चेक करते हैं, हम किसी और रिसोर्स के लिए जाते ही नहीं है। तो ये हमारा टाइम सेविंग अफेयर हो गया कि नहीं हुआ, बताइए? और कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने टाइम टेबल चेक किया, हमें पता चल गया कि हाँ इस टाइम स्लॉट में ये क्लासेस हैं, और लिंक भी उसमें दिए हुए हैं, कई बार लिंक भी दिए हुए होते हैं, और अदरवाइज जो भी अदर पैटर्न ऑफ इंफॉर्मेशन सर्कुलेशन है हम उसको चेक करके हम इजीली जो है क्लासेस में ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, सो द पॉइंट इज दैट इफ द पर्टिकुलर रिसोर्स information or the source information we know, then there is less scope of any type of confusion or diversion. Okay, so that is how. अब जैसे आपको किसी बुक के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप जो है बुक की अवेलेबिलिटी, ठीक है, यूनिवर्सिटी में उस बुक की अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप अकाउंटेंट को तो कांटेक्ट नहीं करोगे, किसको कांटेक्ट करोगे, कौन से ऑफिस को कांटेक्ट करोगे? अकाउंट्स ऑफिस को कांटेक्ट करोगे या लाइब्रेरी ऑफिस को? लाइब्रेरी इज आल्सो ऑफिस। ओके, लाइब्रेरी को कांटेक्ट करोगे या अकाउंट सेक्शन को कांटेक्ट करोगे? बताइए किसको कांटेक्ट करोगे? Library. Library. Why? Because you know that this information I'll get from this particular office. Okay, so that will save your time. Okay, that will we can say that will save you from any type of unnecessary efforts of yours. Okay, so this is how the formal communication, okay, setting these separate offices, this is also part of formal communication. So this will help the person to work efficiently. Okay, that is the point. Now next is, let us quickly I think this we will not be able to complete today, so I'll stop here because it is again very much disadvantages of formal communication. Okay,
See, each coin has its two sides. Do you agree with this point? एक साइड में different picture होता है, दूसरे साइड में different picture होता है. Do you agree with this point, students? Yes, ma'am. Yes, है ना? तो this we have to check that what is the picture at one side and what is the Yes. picture at the other side. Okay, so one side we have checked about the beneficial points, but again it is not that much easy as it is reflecting. ठीक है, जितना easy और जितना impressive ये reflect हो रहा है उतना easy है नहीं. Okay, it has its certain limitations. It has certain, we can say, disadvantageous points. So what are those? We will discuss in next class. Okay, so if you have any question related to our today's discussion, you can place your question within 2 or 3 minutes, and afterwards you can leave. Yes, students. Ma'am, before Huh? ending this class, can you please make us clear about that timing for paper check? Time for exam. Okay, No, ma'am, okay. paper. For extra class. Okay, okay. See, after 5:30, any time is even from 5:30 to 6 o'clock. If you people are comfortable. 5:30 okay है? Because see, 4:30 से even वो meeting जो है, ऐसे तो time slot वो 4:30 to 5 o'clock है, but sometime it continues up to 10 to 15 minutes more. So that's why I'm saying, that's why I'm giving you 5:30. 5:30 ठीक Yes, है? ma'am, that will be okay. हाँ. So 5:30 with the same class link, okay, which we regularly use for our regular classes. Okay, I'll be and I'll be posting the message in the WhatsApp group itself, so need not to worry about that. Okay, so you can join the class and we can discuss about the answer sheets. ठीक है? Okay, ma'am. Okay, any other question? Any other point you need to discuss? If you don't have, then you can leave the meeting.